Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all my students in this today's class. Today we are going to take the first topic of chemistry, solid state. Before going into the details of the topic, I request all of you to take your pen and your notebook, because most of the things that we are going to discuss are to be written actually. I hope your notebook and your pen will be around you in these conditions. So let's begin the topic. This chapter has got 3 marks in your board exam. A very important topic from the perspective of NEET and JEE. So this topic can be divided into 3 subtopics. You can see the first subtopic can be introduction and classification. The second subtopic will be unit cell analysis and packing, and a third will be defects here. So in introduction, we will discuss, you will write there's the state of matter. Actually, the gaseous state and the liquid state are the 2 states that we have discussed in class 11th. In your 12th class syllabus, the solid state has been put in your 12th class syllabus. So we'll start with a statement that the resultant of 2 opposing forces determine the state of matter. A line that's written in your board here. The resultant of 2 opposing forces determine the state of matter. तो वो 2 opposing forces क्या है? These 2 opposing forces are intermolecular force of attraction, जिनको हम IMF पुकार के या IMF से ही डिनोट करेंगे आगे, to save your time and mine as well. और दूसरा फोर्स जो है थर्मल एनर्जी है, TE से हम इसको डिनोट करेंगे आगे, TE थर्मल एनर्जी एंड IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है क्लास 11th में हम इनको डिटेल में पढ़ चुके हैं. These are some attractive forces which bind the constituents of matter together. तो IMF जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यूजुअली जो होते हैं ये एक मैटर के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं और करते हैं. एंड थर्मल एनर्जी नई चीज आपको लगेगी, फर्स्ट टाइम वी आर डीलिंग विद इट. थर्मल एनर्जी इज सिंपली द एनर्जी possessed by a body due to its temperature. You can write down, thermal energy is simply the energy possessed by a body due to its temperature. So, or in other words, आप ये भी लिख सकते हैं, thermal energy is the energy possessed by a body due to the motion of its constituents. ये constituents क्या हो सकते हैं? These constituents could be small atoms, these could be ions, these could be what we can say molecules as well. ये थर्मल एनर्जी क्या करती है? थर्मल एनर्जी जो है, it tries to distract the part, it tries to separate the particles from each other. इन एक मैटर जो होता है, मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये थर्मल एनर्जी इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक दूसरे से दूर भगाने की कोशिश करती है, दूर ले जाने की कोशिश करती है. अब मसला ये होता है कि थर्मल एनर्जी और IMF में कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा. इसी पे, इन 2 फोर्स के रिजल्टेंट पे डिपेंड करेगा कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा, गैस होगा, लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा. तो गैस की जो सूरत हाल होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस में क्या चीज होता है. थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन IMF. थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन IMF. तो यू कैन नोट डाउन, व्हेन एवर द थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन IMF, द स्टेट ऑफ मैटर विल बी ऑलवेज गैसियस स्टेट. क्योंकि थर्मल एनर्जी ज्यादा है. थर्मल एनर्जी क्या करती है? पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर करते हैं. और IMF जो है पार्टिकल्स को एक दूसरे के नजदीक लाने की कोशिश करते हैं. क्योंकि अब थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, लाइक द गैसियस पार्टिकल्स जो गैसियस
स्टेट ऑफ मैटर डज। उसके बाद लिक्विड स्टेट में आ जाइए और सॉलिड स्टेट में, दोनों में, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड स्टेट में, IMF इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। यू विल नोट डाउन इन बोथ liquid state as well as gaseous state, the IMF, intermolecular forces, are always greater than thermal energy. ना फर्क क्या है? जब दोनों states में, liquid state में as well as gaseous state में, IMF is greater than thermal energy, then why is one state liquid and other solid? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन IMF मैंने एक एरो लगाया है, IMF इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी इन लिक्विड्स। लिक्विड स्टेट को अगर आप देखेंगे IMF इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी T, लेकिन सॉलिड स्टेट में IMF इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। तो यू विल इन शॉर्ट यू विल राइट डाउन इन केस ऑफ सॉलिड द थर्मल एनर्जी इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। However, in case of liquids, thermal energy is less than intermolecular force, but it is not that less, which actually occurs in solids. The solids में IMF is very greater than thermal energy, and in liquid state, IMF is simply greater than thermal energy. So I hope this will clear, this may suffice you to clear your concept regarding thermal energy and intermolecular force. Now coming to the solid state, their definition, and what were the earlier views about solids. तो यहाँ पे हम solid state, solids को जो you write down the definition of solids या solids किन चीज़ों को हम कहते हैं। earlier view जो थे, पुराने views जो थे before the current definition, solid को हम एक ऐसी substance को हम solid कहते थे that could be held in hand, जिसको हम हाथ में ले सकते थे, or that can be thrown, जिसको फेंक सकते थे, or something that could be heaped up, या कोई ऐसी चीज जिसका हम ढेर बना सकते हैं। इसी तरह से और कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की बताई गई थी पहले बिफोर कमिंग टू द करंट डेफिनेशन। बट यू नो, बहुत निचले क्लास से, क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड किस चीज को हम कहते हैं। टुडे वी डिफाइन सॉलिड, यू राइट डाउन समथिंग दैट हैज अ डेफिनिट शेप, and this is not device here, it is actually definite volume, definite shape and definite volume. It's not definite, it's not device, it is definite volume. So we define solids today as the substance having a definite shape and definite volume at RT. What's RT? Here you will see the RT. इस सर्कल में मैंने RT को डाला है। RT simply, you know that being chemistry students, RT is the room temperature. रूम टेम्परेचर पे कोई भी सबस्टेंस जिसका शेप डेफिनेट हो, जिसका वॉल्यूम डेफिनेट हो, उसको हम सॉलिड कहते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम? इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। टेक ए गिलास ऑफ वाटर एंड पुट द सेम गिलास ऑफ वाटर इन सम रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ये जो गिलास में वाटर था, here the shape of water is cylindrical, यानी जो शेप गिलास का है वही शेप वाटर का है। Now put this water into this rectangular block, the shape of water will be exactly the rectangular block. So we can say that this water does not have its own shape. Its shape gets changed. In other words, we can say water has some indefinite shape. Its shape is the shape of container, but same thing is not true for solids. For example, if you have a piece of stone, doesn't matter wherever you keep it, in a glass or in a rectangular block, in a room or somewhere outside lying, इसकी जो shape होगी stone की, it will always be the shape which it has. Spherical होगी तो spherical, rectangular होगी तो rectangular. At room temperature, the shape will not change with the changing containers, changing circumstances, changing other conditions. Such a shape is called as definite shape. So I hope this will suffice. आपको समझ आया होगा कि एक definite shape, इसी तरह से definite volume का भी concept यहाँ से ले सकते हैं आप। Coming forward, तो solids की जो definition होने के बाद we will discuss few properties. We will write down few properties of solids.
So we will come to the last point of this topic, properties. PROP properties मैंने शॉर्ट में लिखा है. तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी वही जो अभी हमने डिस्कस किया है, हैविंग ए डेफिनेट शेप एंड ए डेफिनेट वॉल्यूम. Hope you are writing down these points, and you can make it you can make a note of it for your examination point of view, or I can send the PDF file of the notes of the solid state into the group WhatsApp group that we are running actually. तो दूसरी प्रॉपर्टी है फिक्स्ड पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. एक सॉलिड जो होता है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ सॉलिड लाइक दिस, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, लेट मी ड्रॉ सर्टेन पार्टिकल्स इन इट. ये कुछ पार्टिकल्स मैंने इसमें बनाए हैं. दिस आर फिक्स्ड पोजीशंस. ये अपनी पोजीशन से हिलते डुलते नहीं. हाँ, दिस कैन रोटेट, दिस कैन वाइब्रेट, लेकिन इनकी जो मेन पोजीशन है, यानी अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है, दिस पार्टिकल कैन गो अप एंड डाउन, और दिस कैन रोटेट स्लाइड इन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन अदर डायरेक्शन. बट जो इसकी मेन पोजीशन है, वो अपनी मेन पोजीशन जिसको कहते हैं एवरेज पोजीशन, अपनी पोजीशन से वो नहीं हटेगा. जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक गैशियस पार्टिकल है, अगर एक गैशियस स्टेट, अगर एक गैस हमारे एक रूम में पड़ा हुआ है, एक कमरे में चूंकि गैस होते हैं, एक गैस का जो पार्टिकल है कमरे के किसी भी कोने में जा सकता है, इट्स फ्री टू मूव. लेकिन सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं है. द पार्टिकल है फिक्स्ड पोजीशन, बट यस इट कैन रोटेट एंड वाइब्रेट on its own position, but it will not move from point number 1 to point number 2 as solids and liquids in some case, to some extent in liquids. लेकिन solids में बिल्कुल they can prove they have translational motion, but not in solids. They do not have any such thing called a translational motion. They can vibrate, they can rotate at their fixed positions. So this is what we mean by the statement that in solids the constituents have a fixed position. Number third point, high density. Out of the three states of matter, solid, liquid and gas, solids have the highest density. Reason simple है, जो आपको क्लियर हुआ होगा ऊपर, because the particles are close together, closest of the three. तीन स्टेट्स में से सॉलिड ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा क्लोज है. पार्टिकल्स क्लोज होने से क्या हो जाता है, द डेंसिटी विल इंक्रीज. डेंसिटी, यू नो, डेंसिटी इज इक्वल टू, शाबाश, डेंसिटी वी डिफाइन एज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी मास डिवाइड बाय, जितना कम वॉल्यूम होगा उतना डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि this volume is inversely proportional to density. अब जब बहुत सारे particles एक कम space में आ गए, that means volume will decrease, density will increase. So in case of solids we have high density in comparison to liquids and gaseous state of matter. Number 4, this is practically incompressible. We write down solids are practically incompressible. तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लियर करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी से क्या माने. यू राइट डाउन कंप्रेसिबिलिटी, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी. तो इन रफ सेंस इसी को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं. जब एक सबस्टेंस का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, जब हम बाहर से इस पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल टेक ए बैलून, फिल इट विद एयर, और यहाँ पे एक टाई की जिसका नॉट. तो बैलून को अगर हम बाहर से अपने हाथों से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है घट जाता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड्स जो है आपने लिखा, सॉलिड्स आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड्स पे आप जितना भी प्रेशर डाल दीजिए, ये जो है दिस, अगर इसका वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 1 लीटर है, द वॉल्यूम विल रिमेन प्रैक्टिकली 1 लीटर, इट विल नॉट चेंज. हाँ, जो माइक्रोस्कोपिक चेंज आ जाती है दैट्स नेग्लिजिबल. यानी अगर ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सॉलिड के 2 पार्टिकल्स बनाए, यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, अगर थोड़ा बहुत पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये इतना नेग्लिजिबल होता है कि कंप्रेसिबल प्रैक्टिकली जो है वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा. इफ दिस पार्टिकल
अगर हम बाहर से एक फोर्स अप्लाई करेंगे, जो ये वाला पार्टिकल है, दिस पार्टिकल में कम क्लोजर टू दिस पार्टिकल, बट लेकिन ये इतना कम होगा कि प्रैक्टिकली जो इस सारे सॉलिड का वॉल्यूम है दैट विल रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट. दैट विल रिमेन प्रैक्टिकली मीन्स समथिंग दैट कैन अनमेजरेबल अकाउंट, जिसको हम जब मेजर करेंगे फोर्स अप्लाई करने से पहले और फोर्स अप्लाई करने के बाद, इट विल बी 1 लीटर. तो प्रैक्टिकली टर्म मैंने इसलिए यूज किया है, पार्टिकल्स डू चेंज देयर पोजिशंस टू स्लाइट एक्सटेंट बट दैट इज नेग्लिजिबल. Now, coming to the last property of solids is solids are rigid. We write down solids are rigid. Rigid. तो rigidity क्या है? Compressibility आपने अभी पढ़ा. These are incompressible means solids का जो वॉल्यूम है ये चेंज नहीं होता है अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. तो rigidity के बारे में हम ये लिखेंगे, solids की जो शेप होती है it does not change upon application of external force. Shape यानी compressibility was related with volume and rigidity is related with shape. शेप सॉलिड्स का चेंज नहीं होता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं. क्यों नहीं चेंज हो जाता है? बिकॉज एक्चुअली द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स डज नॉट चेंज अपॉन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. मैं इस तरह से फिर समझाऊंगा. ये दो पार्टिकल्स एक सॉलिड के बाहर से हमने फोर्स अप्लाई किया है, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज नहीं आ जाते हैं, यानी इनमें जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट. दैट इज एक्चुअली व्हाई व्हाट वी कॉल्ड एज रिजिडिटी. द सेपरेशन और द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं इंटरपार्टिकल डिस्टेंस. दिस इंटरपार्टिकल डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट अपॉन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. तो इसी चीज को एक्चुअली हम रिजिडिटी भी कहते हैं. जिस सबस्टेंस में, फॉर एग्जांपल गैसेस में, लिक्विड्स में, ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज हो जाता है अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो दोज आर नॉट रिजिड. सो रिजिडिटी यू कैन डिफाइन एज द रेजिस्टेंस टू द चेंज इन शेप अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. या रिजिडिटी यू कैन सिंपली डिफाइन एज द रेजिस्टेंस टू द चेंज, the resistance to the change in intermolecular distances between the particles upon the application of external force. Tomorrow, inshallah, we will take up the classification of solids. It was introduction, first class of this topic today. Hope aapko understand hua hoga. And if you have anywhere some problem, you can revert to me on our WhatsApp group, and we will discuss there and clear your doubts. في أمان الله.